it will be super simple with the basics only. I'll cover the basics today. Later in the next sessions, we'll see what is there. But for today, we'll just see what are the fundamentals, what are the terms in AI, okay, that are commonly used. So I'll be sharing you the PPT and I'll be also telling what is happening. So, and if you're facing any doubt, just let me know at the end of the session. At the end of the session, I have also planned for a Menti quiz. If it is possible, we'll conduct that, because learning something and then implementing it in the form of quiz, I think it's the best way to learn and grasp concepts. So I'll begin with the session right now. Just a second. Is the screen visible? Please let me know. Yes, visible. Okay. So, can anyone tell what is AI in just simple terms? We have already discussed this thing in the last session. So, if anyone can tell, please. Anyone? No one. Okay, okay, then I'll begin only. So, please interact with me because I always interact when someone asks me questions. So, please do the same when I'm asking the questions to you. And they will be super easy because I'm not the professor. So, our levels are same. I'll be asking the simple questions only. So basically, AI is nothing but we have already discussed in the last session. When machines mimic the humans, like how to act, how to think, how to respond. Okay. So there are two terms, which is AI and ML. We have already seen that AI is the goal thing and ML is a method for implementing that goal. Okay. Like suppose you have to reach to a goal from A to B. Okay. What method you will take? So goal state is your AI, and the methods which you are taking, okay, the algorithms which you are performing is something called as ML. Okay, now we'll begin with. So okay, so there are three types of AI. First is narrow AI, general AI, and super AI. Okay, narrow AI is nothing but when AI is doing just normal task. Okay, only one specific type of task. Okay, सिर्फ एक ही task कर रहा है, only एक specific task. Like if I'll talk about imaging, okay, so imaging, what is happening in imaging, we are capturing a image, it is telling you what it is all about. Okay, it is not using its mind, we have already fed up the data, उस data को ही लेके वो हमें बता रहा है, कुछ extra work नहीं कर रहा है. Okay, general AI is something जो हमारे प्रेफरेंसेस को देखता है, फीडबैक लेता है एंड देन उसके बेसिस पे टाइम टू टाइम अपडेट्स देता है और एक ह्यूमन की तरह थिंक कर सकता है, लाइक आर चैट जीपीटी. इफ यू आर स्टार्टिंग टेक्सटिंग टू चैट जीपीटी, अगर तुम किसी कॉन्टेक्स्ट के बारे में चैट जीपीटी पे पूछ रहे हो, इफ यू आर टाइपिंग समथिंग, इफ यू आर like searching something on the chat gpt and you are typing a prompt related to the same thing, तो वो उसके आगे से continuation में sentences देगा and it will be knowing that what you have asked and what it has to give. Okay, then we have super AI. Super AI is something which surpasses human being, like वो human being से ज़्यादा creative है and वो human से ज़्यादा अच्छा respond कर सकता है. But actually super AI has not come to the existence right now. We are just studying it in the theory, but अभी वो real world scenario में applicable नहीं है. Okay, so now I want to ask you the applications of AI, which is super simple. Please, someone, if anyone is interested, can tell what are the applications of AI? Please, anyone, applications of AI. Okay. What other things, like not only ChatGPT, और थोड़ा domains में जाओ, सोचो, और भी बहुत सारे domains. Automobile. Yeah, fine. Even एक ही, healthcare. Okay, fine. So, I think you are clear with the applications of AI. AI को हम हर जगह use कर रहे हैं nowadays. Okay, AI is being used in everywhere, whether it is healthcare, whether it is automobile industry, or anything. We are using healthcare everywhere. So, those were the applications of AI. Then I have already talked about weak AI and strong AI. Weak AI is nothing but narrow AI,
which is performing only one type of task, okay, like chat gpt, Siri. And strong matlab it chat gpt also comes under general ai, as I've told you. But if I'll talk about strong ai is something which I've already told, which is super ai. Super ai is something जो ह्यूमन की तरह ही वर्क कर रहा है, एंड इवन इट इज मोर क्रिएटिव दैन ह्यूमन, ओके. बट अभी वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, बट माइट बी इन द फ्यूचर इट विल कम समडे. History mein I am not going to the history. So I'll talk about this Mycene architecture. So Mycene architecture was an architecture which was developed in 1970s, okay, and it is one of the most, like one of the first expert systems. So here in Mycene architecture there was uh, a doctor and a patient. So there was the data of patient and it was connected to a doctor. So on the basis of that data, there was a consultation system which would tell the doctor that which would tell the patient that what diseases you have on the basis of the symptoms the patient has put. And also it will tell the explanation, like consultation system will take the symptoms and will go to a particular point. Like if a person is entering that I have a mild fever or a shivery sense. Okay. So consultation system will say, okay, that means you either have a bacterial infection or a viral infection. Now the explanation system, it will tell in the more detail, okay, on the basis of the fed data जो उसमें हमने already fed किया हुआ है. तो explanation system एक particular conclusion पे जाएगा that whether it is a bacterial infection or the viral infection. ये हमें conclusion देगा. And what is a knowledge acquisition system? Knowledge acquisition system के two parts होते हैं. First is knowledge base and the other is inference system. Okay. So knowledge base में हम जो भी facts हैं, okay, whatever facts are there, like I told you ना, the symptoms or any symptoms like related to अगर हमने एक अगर हम लाइक एक डॉक्टर बन रहे हैं, वी नो कि अगर एक पर्टिकुलर डिजीज है तो उसके क्या सिम्टम्स होने वाले हैं, ओके. सो ऑल दो सिम्टम्स आर स्टोर्ड इन अ नॉलेज बेस. एंड इन्फेरेंस सिस्टम इज समथिंग जो करंट वर्ल्ड सिनेरियोज को या फिर फीडबैक लूप को देख देख कर नए इन्फेरेंसेस जनरेट करता है. लाइक इफ यू हैव माइल्ड फीवर एंड शिवरीनेस, so you can have either of the bacterial infection or viral infection. तो ये दोनों possibilities हैं and those possibilities are present in inference system, but conclusion will be given by the explanation system. So ये Mycene architecture थोड़ा बहुत clear हुआ, like little bit what is happening. मुझे बोल के बोल दो क्योंकि I can't see your reactions while presenting. हाँ थोड़ा थोड़ा. Okay. अच्छा तो क्या समझ नहीं आया ये बोलो क्या. Okay, so I'll tell in It very was basic. clear. It was Okay. understandable. Okay. So like, okay, there is a doctor, there's a patient. Okay. So there is an interface. You can consider it like an interface. And उस interface में patient अपने symptoms को डालेगा. ठीक है. Patient will tell कि उसको fever है या उसको shiver हो रहा है, जो भी है वो अपने symptoms को enter करेगा. बट वो सिम्टम्स जो उसने एंटर किए हैं उसका डेटा कहीं ना कहीं स्टोर्ड होना चाहिए. ठीक है. उसी के बेसिस पे तो हमारा मॉडल प्रेडिक्ट करेगा कि इसको क्या है क्या नहीं है. तो वो जो डेटा है उसको जो कंसल्टेशन सिस्टम है वो मतलब पॉसिबिलिटी देगा कि अगर इसको फीवर भी है, इसको शिवर भी हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि उसको आइदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा या वायरल इन्फेक्शन होगा. लेकिन वो सिर्फ पॉसिबिलिटी दे रहा है. ठीक है. इट इज नॉट गोइंग टू अ कंक्लूजन. फिर हमारा एक्सप्लेनेशन सिस्टम आएगा. एक्सप्लेनेशन सिस्टम में हमारा मॉडल एक पर्टिकुलर कंक्लूजन दे देगा. इट्स लाइक अ Q&A सिस्टम जहाँ पे क्वेश्चन डालो और तुम्हें फाइनल आंसर मिलेगा. सो वो एक्सप्लेनेशन दे देगा. और एक्सप्लेनेशन कैसे देगा? उसके पास्ट जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसके बेसिस पे एक पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन पे जाएगा. वो लाइक पूरा पॉसिबिलिटीज नहीं होगी, एक पर्टिकुलर कंक्लूजन होगा. एंड एक कंक्लूजन पे हम आए कैसे, तो उसके लिए हमारा नॉलेज एक्विजिशन सिस्टम है. नॉलेज एक्विजिशन सिस्टम में हमने ऑलरेडी डेटा डाल रखा है. ठीक है. तो जो हमारा मॉडल है उसके पास ऑलरेडी फेड डेटा है. ठीक है. ठीक है कि बहुत सारे उसके पास सिम्टम्स हैं. वो उस सिम्टम के हिसाब से वो चेक करेगा कि अगर इसको फीवर भी है, इसको शिवर भी हो रहा है या व्हाटसोएवर एक दो और सिम्टम्स है, तो एक फाइनल कंक्लूजन वो एक्सप्लेनेशन सिस्टम को देगा. एंड देन एक्सप्लेनेशन सिस्टम विल टेल द डॉक्टर कि इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है. अभी थोड़ा समझ आया?
स्टैटिक और डायनेमिक डीबी इट्स लाइक वो डेटाबेस है जहाँ पे तुमने अपना चीजें स्टोर करके रखी है. डायनेमिक डीबी कीप्स ऑन चेंजिंग, लाइक तुम्हारा जो फीडबैक है, फीडबैक के हिसाब से जो इन्फरेंस सिस्टम होता है ना, इन्फरेंस सिस्टम एक इंटेलिजेंट एजेंट की तरह, एक नॉलेज बेस्ड एजेंट की तरह वर्क करता है. वो तुम्हें आगे आके समझ आएगा. अभी ये बहुत छोटा सा एक कॉन्टेक्स्ट है, इसको समझो कि इन्फरेंस जो सिस्टम है वो एक ही डेटा पे नहीं रहता, वो फीडबैक और रियल वर्ल्ड सिनेरियो को देख के और भी चीजें लर्न करते रहता है. तो इट्स लाइक डायनेमिक एंड स्टैटिक. वो मैं तुम्हें आगे की जो क्लासेस होंगी उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, बट अभी थोड़ा कॉन्टेक्स्ट तो मिला ना कि कैसे कोई एक एआई मॉडल वर्क करता है. ओके okay. ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, इसके आगे जाएंगे. ओके, सो एआई 4 टाइप से एक्ट कर सकता है. एक तो ह्यूमंस की तरह सोच सकता है, वी नो दैट. ओके, न्यूरल नेटवर्क्स ह्यूमंस की तरह, लाइक जैसे ह्यूमन ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, सिमिलरली न्यूरल नेटवर्क्स और समथिंग लाइक दैट. देन रैशनल के कॉन्सेप्ट पे भी मैं आऊंगी, तो उसको मैं आगे के लिए रख रही हूँ. देन एक्टिंग ह्यूमनली, इट कैन बिहेव लाइक अ ह्यूमन एंड इट कैन एक्ट रैशनली. सो रैशनल कॉन्सेप्ट हम अभी आगे देखने वाले हैं. उससे पहले हम ये ट्यूरिंग टेस्ट देखेंगे. सो ट्यूरिंग टेस्ट वाज अ टेस्ट दैट वाज डन. इसमें क्या होता था, देयर वाज अ ह्यूमन क्वेश्चनर, एक ह्यूमन क्वेश्चनर है और 2 चैम्बर्स है हमारे पास, जहाँ पे एक कंप्यूटर रिस्पॉन्डेंट है और एक ह्यूमन रिस्पॉन्डेंट है. ओके, सो कंप्यूटर रिस्पॉन्डेंट से भी सेम टाइम में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं हम, एंड ह्यूमन रिस्पॉन्डेंट से भी हम सेम टाइम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं. सो अ ह्यूमन क्वेश्चनर इज आस्किंग द क्वेश्चंस टू बोथ द रिस्पॉन्डेंट्स एट द सेम टाइम, एंड आफ्टर द टेस्ट हैज फिनिश्ड, so when the human questionnaire checked the answers, तो जो कंप्यूटर रिस्पॉन्डेंट ने आंसर दिया था एंड जो ह्यूमन रिस्पॉन्डेंट ने आंसर दिया था वाज वेरी मच सिमिलर. ओके, कुछ चेंजेस ही नहीं थे, दे वर कंप्लीटली सेम, द आंसर्स वर कंप्लीटली सेम. सो इट वाज रियली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि कौन सा वाला आंसर कंप्यूटर ने दिया है, कौन सा वाला आंसर ह्यूमन ने दिया है. सो यहाँ से हमें मतलब दिस टेस्ट वाज डन टू सी कि मशीन कितना मिमिक कर सकती है ह्यूमंस को, और कितना उसकी तरह ही एक्ट कर सकती है, उसकी तरह ही थिंक कर सकती है. सो इट वाज जस्ट अ सिंपल टेस्ट जो इस चीज को प्रूव करने के लिए हुआ था. Then artificial intelligence, machine learning, and deep learning. So AI is a superset, if I say, and machine learning is a subset of AI, and deep learning is a subset of machine learning. So AI and ML हमने already discuss कर लिया. Deep learning is something जहाँ पे हम neural networks को कैसे implement करते हैं, neural networks के बारे में बहुत सारा पढ़ रहे होंगे. So it is DL. Okay. अभी तक अगर कुछ थोड़ा बहुत समझ नहीं आया है तो प्लीज बोलो, जहाँ पे थोड़ा बहुत डाउट है उस माइसन के अलावा, क्योंकि माइसन वाला हम नॉलेज बेस्ड सिस्टम में आगे पढ़ेंगे. कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो टिल नाउ. ओके, सो अभी द फंडामेंटल थिंग इन एआई कि एक एजेंट क्या होता है. एजेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन एआई इफ आई टॉक अबाउट. ओके, लाइक हर फील्ड में कुछ कुछ टर्म्स होते हैं जो हमें यूज करने होते हैं. सो एजेंट इज अ टर्म विच वी आर यूजिंग इन एआई वर्ड. So AI is nothing but something which senses its environment through sensors and वो उस पे act करेगा with the help of actuators. Okay, so like there are 3 types of agents: human agent, robotic agent, and software agent. So agent कुछ नहीं है, like I am a agent. I am sensing my environment. What is my environment? My environment can be anything which is surrounding me. My room, my college, my classroom, wherever I am sitting presently. Okay, it will be my environment. और मैं environment को sense कैसे कर रही हूँ? With the help of my sensory organs, which is eye, nose, ear, okay, everything, and skin. And how I am acting on it, like if I have to सेंस कि अब मेरे को कोई इफ आई वांट टू ड्रिंक अ टी, ओके, तो मैं टी को सेंस कैसे करूँगी दैट इट इज हॉट और कोल्ड? विद द हेल्प ऑफ माय सेंसरी ऑर्गन्स. एंड व्हाट विल बी माय नेक्स्ट स्टेप? सो माय नेक्स्ट स्टेप विल बी टेकिंग एन एक्शन. सो मैं वो एक्शन कैसे लूँगी? विद द हेल्प ऑफ माय आर्म्स. आई विल यूज माय आर्म्स एंड माय माउथ टू ड्रिंक द टी. तो सेंसर्स आर समथिंग जिसके हेल्प से हम सेंस करते हैं एनवायरनमेंट को, एंड एक्चुएटर्स आर समथिंग जिसके हेल्प से हम एक्शंस परफॉर्म करते हैं इन द एनवायरनमेंट. ओके, सो ह्यूमन एजेंट आई ऑलरेडी टोल्ड विद द हेल्प ऑफ माय एग्जांपल. नाउ रोबोटिक एजेंट इज समथिंग जहाँ पे रोबोट्स कम इनटू पिक्चर्स. इफ यू विल टेक अ रोबोट, व्हाट आर इट्स सेंसरी ऑर्गन्स? कैमरास, different type of infrared sensors, or different sensors depending to what type of robot it is. Okay, एंड वो उस पर वर्क कैसे करेगा, एक्शंस कैसे लेगा? विद द हेल्प ऑफ एक्चुएटर्स. सो व्हाट आर द एक्चुएटर्स इन दिस केस? द मोटर्स और different parts of robots will be the actuators. Third type of agents we have is software agent. Software agent is nothing but हम अपना
डेस्कटॉप स्क्रीन खोलते हैं, किसी फाइल पर जाना होता है तो हम की स्ट्रोक देते हैं, आइदर वील एंटर और वील गो टू अ फाइल। ओके, फाइल के कंटेंट को एक्सेस करने के लिए हमें की स्ट्रोक देना पड़ेगा। एक फाइल मेरे सामने है, उसको मुझे ओपन करना है, तो मैं उस पर क्लिक करूंगी, राइट, एंड उसके बाद जो भी डिस्प्ले होगा दैट विल बी माय एक्चुएटर। तो सेंसिंग इन द केस ऑफ सॉफ्टवेयर एजेंट विल बी अ की स्ट्रोक। आई बी सीइंग अ फाइल, दैट इज माय सेंसर, एंड जब मैं उस पर एक्ट करूंगी, लाइक whether I am writing something, appending something, or deleting the file, that is the thing which is called the actuator in the case of software agent. ये समझ आया? agents समझ आया? हाँ, तो सॉफ्टवेयर एजेंट में क्या है ना कि अगर तुम्हारे पास एक फाइल है, ठीक है, तो फाइल के जो भी कंटेंट्स है वो तुम्हारा सेंसरी इनपुट है। लाइक फाइल में जो भी चीजें गिवन है वो तुम्हारा सेंसरी इनपुट है, एक इनपुट है समझो। तुम्हें उसको एक्सेस करना है तो तुम कैसे करोगे? उस पर क्लिक करोगे ना। सो तुमने क्लिक किया तो वो की स्ट्रोक जो है दैट इज योर एक्चुएटर, जिसकी हेल्प से तुम उस फाइल को फेच कर रहे हो। समझ आया? हम्म। तो एजेंट्स अगर समझ नहीं आया तो फिर से बोलो, मैं रिपीट करूंगी, बिकॉज एजेंट्स के बारे में देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग टू डिस्कस अबाउट एजेंट्स। सो एजेंट्स मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इन वेरी बेसिक टर्म्स, बस एक लाइन में, कि एजेंट कोई भी वो चीज है जो इन्वायरमेंट को सेंस कर रही है। ओके, इट इज सेंसिंग द इन्वायरमेंट थ्रू सेंसर्स, एंड इट इज टेकिंग द एक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इट हैज सेंस्ड विद द हेल्प ऑफ एक्चुएटर्स। बस सेंस करना है विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स और एक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ एक्चुएटर्स, दैट इज सेंसर्स। तुम ह्यूमन एजेंट को लोगे तो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ह्यूमन एजेंट को लेके रखो, इट विल बी सिंपल। नाउ सेंसर्स एक्चुएटर्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, सो सेंसर इज अ डिवाइस जिसकी हेल्प से हम सेंस करते हैं किसी भी इन्वायरमेंट को, एंड एक्चुएटर इज किस जिसकी हेल्प से हम एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। Now, these are the four things which we have to discuss. Percept. Okay, so this is the diagram. It is telling there is a agent. Okay, it could be any type of agent. Question mark इसलिए given है क्योंकि it can be a human, software, robot, कोई सा भी agent हो सकता है. Working process is same in every case. ठीक है, तो environment से वो percept लेगा. Percept is nothing but a sequence. मतलब एक action ले, मतलब एक action को sense करेगा. उसको sense करने के बाद वो एक्चुएटर की हेल्प से परफॉर्म करेगा कि उसको एक्शन क्या करना है, जैसे मैंने टी का एग्जांपल देके बोला। अभी हम ये फोर थिंग्स डिस्कस करने वाले हैं, परसेप्ट, परसेप्ट सीक्वेंस, एजेंट फंक्शन एंड एजेंट प्रोग्राम। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो बहुत क्लियर होनी चाहिए इफ यू आर स्टडिंग एआई। सो फर्स्ट इज परसेप्ट। परसेप्ट इज नथिंग बट अगर कोई भी एजेंट अपने एनवायरनमेंट से, क्योंकि एजेंट हमें पता है एनवायरनमेंट से सेंस करेगा, तो एनवायरनमेंट से अगर कोई एक इनपुट को सेंस कर रहा है, एक ही इनपुट को ले रहा है, इफ इट इज टेकिंग ओनली वन इनपुट फ्रॉम द एनवायरनमेंट, देन इट इज कॉल्ड परसेप्ट। लाइक एग्जाम्पल से समझ आएगा, if there is a robot and it sees a red light, so red light is a percept। red light एक सेंस ही है ना, एक सेंस किया उसने कि अभी रेड लाइट है, so it is only one input, सिर्फ एक ही इनपुट लिया है, that is रेड लाइट को सेंस किया है, so it is a percept। okay, next comes percept sequence। percept sequence बहुत सारे, like it is a combination of inputs, बहुत सारे अगर हम इनपुट्स लेंगे, बहुत सारे इनपुट्स का कलेक्शन अगर हम लेंगे, so that is percept sequence। okay, रोबोट विल नॉट ओनली परसेप्ट रेड लाइट हर बार, ठीक है, एक बार ही रेड लाइट परसेप्ट किया, ठीक है, नेक्स्ट टाइम हो सकता है वो ग्रीन लाइट देखे, थर्ड टाइम हो सकता है वो येलो लाइट देखे, फोर्थ टाइम हो सकता है वो हॉर्न सुने, या कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती है ना, इफ देयर इज अ लाइक नॉट ओनली वन इनपुट बट वेरी लाइक कलेक्शन ऑफ इनपुट्स, या हिस्ट्री बोल सकते हैं। अभी हम छोटे से बड़े होकर आए हैं, ठीक है, हमने इतने सारे सीक्वेंसेस किए हैं, एट अ प्रेजेंट टाइम हम एक ही काम कर रहे हैं, एक ही चीज सेंस कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है ना कि अगर हमारे पास कोई सिनेरियो आ जाए तो हम उसको आंसर ना दे पाए अगर हमने वो ऑलरेडी सीखा है तो जो भी हमारी पास्ट लर्निंग्स है, जो भी हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस है, दैट इज कॉल्ड परसेप्ट सीक्वेंस। नाउ एजेंट फंक्शन। एजेंट फंक्शन इज द थिंग कि परसेप्ट सीक्वेंस को हम एक्शन के साथ मैप कैसे करें। अभी हमारे पास एक इनपुट है, हमारे पास कलेक्शन ऑफ इनपुट्स है, लेकिन हमें इनपुट से कुछ नहीं करना, इनपुट तो सेंसर्स ने ले लिए, अभी एक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे, दैट इज समथिंग विच कम्स अंडर एजेंट फंक्शन, लाइक हाउ टू परफॉर्म एन एक्शन। ओके, कि तो जो हमारे जितने भी हमारे पास इनपुट्स हैं उनकी हेल्प से ही हम कोई आउटपुट देंगे। सो इनपुट इज गिवन बाय सेंसर्स एंड आउटपुट इज गिवन बाय एक्चुएटर्स। तो इनपुट तो मिल गया, अभी आउटपुट कैसे जनरेट करना है, सो दैट इज अंडर एजेंट फंक्शन विच मैप्स जो भी हमारे इनपुट्स थे उसको एक्शन के साथ मैप करेगा। ओके, लाइक इफ देर इज अ रेड लाइट,
So उसका action क्या होना चाहिए? It should stop the car. Okay. Red light was the input that we have already seen. It is a percept, and action is the stopping of car. Okay. So this is agent function कि वो क्या function कर रहा है, कैसे input से action पे जा रहा है. नाउ एजेंट प्रोग्राम इज नथिंग बट जो हमने एजेंट फंक्शन दिया है ना, उसी को बस हम किसी एल्गोरिदम, किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से अपने एजेंट के अंदर फेच करेंगे. अब रोबोट के अंदर भी हमें कुछ एल्गोरिदम्स, कुछ सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा ना, देन ओनली इट विल परफॉर्म. तो हमने उसके अंदर डाला कि देयर इज अ रेड लाइट यू हैव टू स्टॉप, इफ देयर इज अ ग्रीन लाइट यू हैव टू गो. तो दिस इज अ एजेंट प्रोग्राम. ये 4 टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गई क्या? हम्म. ओके. अगर नहीं है तो प्लीज बोल देना, ऐसे 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 मत कहना. ओके. नाउ ये एक हमारा प्रॉब्लम है. ओके, तो कोई मुझे बताएगा यहाँ पे एजेंट क्या है प्लीज, इन दिस वैक्यूम क्लीनर वर्ड प्रॉब्लम, व्हाट इज द एजेंट? जितना अभी तक एजेंट को पढ़ा है कि वो सेंस करता है एनवायरनमेंट से, एक्शंस लेता है. सो व्हाट डू यू थिंक कि इस वैक्यूम क्लीनर प्रॉब्लम में एजेंट क्या होना चाहिए? करेक्ट. सो इस वैक्यूम क्लीनर प्रॉब्लम में वी हैव अ एजेंट व्हिच इज वैक्यूम क्लीनर, एंड इट इज नॉट अ ह्यूमन एजेंट, ऑब्वियसली इट इज अ रोबोट एजेंट, जो हमने 3 कैटेगरीज के एजेंट्स पढ़े हैं. So what is happening in this vacuum cleaner problem is there are two rooms A and B. Okay, one is at right, that is B room, and one is at left, that is A room. Okay, and both of the rooms are dirty at the same time. And there is a vacuum cleaner agent which is currently present in the A room. Okay, हम बहुत सारे possibilities देखने वाले हैं, percept sequences देखने वाले हैं, उसके basis पे क्या actions है. It is already provided in the table. So firstly we'll see if if the vacuum cleaner is in A room and that A room is clean. Okay, तो ए रूम में अगर वैक्यूम क्लीनर प्रेजेंट है और वो रूम क्लीन है, तो उस रूम में तो उसका कोई काम ही नहीं है ना, बिकॉज वैक्यूम क्लीनर विल डू व्हाट, इट विल क्लीन द रूम. सो हम उस टाइम पे क्या करेंगे, उस वैक्यूम क्लीनर एजेंट को बोलेंगे कि वो राइट वाले रूम में शिफ्ट हो जाए, दैट मीन्स वो बी रूम में चले जाए. लेकिन अगर if it is an A room and the room is dirty, so what it has to do, it has to suck the dirt or it has to clean the room. ठीक है, एक ये परसेप्ट है. देन इफ इट इज इन बी रूम एंड बी रूम इज ऑलरेडी क्लीन, तो अब बी रूम क्लीन है एंड इट इज इन बी रूम, तो पॉसिबिलिटी क्या है, फिर हम उसको ए रूम में भेजेंगे कि अभी ए रूम को जाकर चेक करो वेदर इट इज क्लीन और नॉट. एंड इफ इट इज इन बी रूम एंड द बी रूम इज डर्टी एट द सेम टाइम, तो उसको वहां से डर्ट को क्लीन करना पड़ेगा या सक करना पड़ेगा. ओके, दीज आर द 4 परसेप्ट्स. बाकी के भी परसेप्ट्स का हम ऐसी कॉम्बिनेशन बनाएंगे, लाइक इफ इट इज इन द ए रूम एंड ए रूम इज क्लीन, ठीक है, तो उसको कुछ नहीं करना है, आइदर वो राइट साइड जाएगा, या फिर एक काम कर सकता है, थोड़ी देर बाद वहीं पे स्टॉप होके अगेन इट कैन सेंस कि अभी तो डर्ट एक्यूमुलेट नहीं हुआ उस रूम में, अगर फिर भी वो रूम क्लीन है तो उसको राइट साइड ही जाना है. ठीक है, और इफ इट इज इन ए रूम इट इज क्लीन, इट विल वेट फॉर सम टाइम, again it will check now if the room is dirty, so it has to suck the dirt. तो ऐसे करके बहुत सारे परसेप्ट सीक्वेंसेस हैं, लाइक उसकी हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री, जो भी उसने एक्शंस परफॉर्म किए हैं, ठीक है, ये उसकी हिस्ट्री है, और उसके बेसिस पे अभी न्यू एक्शंस वो कैसे परफॉर्म करने वाला है उसको बस मैप किया हुआ है. ठीक है, क्योंकि हमारे पास अगर हिस्ट्री नहीं है तो हम नए एक्शंस को टैकल कैसे करेंगे. ओके, सो दैट इज द थिंग, वी नो व्हाट इज डार्कनेस, हमें पता है डार्कनेस क्या होती है, तो हमें पता है व्हाट इज डार्क क्योंकि हम छोटे से सीखते हुए आए हैं, तो वहाँ पे हम फ्लैश लाइट ऑन करेंगे या कोई भी लाइट ऑन करेंगे. बट अगर हमें पता ही नहीं है कि व्हाट इज डार्क, अगर कोई नया बच्चा है छोटा छोटा, तो उसको नहीं पता होता है ना व्हाट इज डार्क एंड व्हाट इज लाइट, तो उस केस में ही और शी इज कम्प्लीटली अननोन अबाउट द एनवायरमेंट, तो वो उस केस में कुछ नहीं कर पाएगा. सो फॉर एनी एजेंट, हमें एजेंट को परसेप्ट सीक्वेंसेस देने होते हैं, पूरी हिस्ट्री देनी होती है कि कैसे कैसे स्टेट्स हो सकती हैं, उसके बेसिस पे वो नए एक्शंस परफॉर्म करेगा. अंडरस्टूड? ये वैक्यूम क्लीनर वाला. ओके okay. और ये एक होमवर्क क्वेश्चन है जो तुम लोग कहीं पे नोट कर सकते हो. दैट इज हाउ डू वी डिजाइन अ एजेंट दैट कैन वाइप द विंड स्क्रीन्स. ओके, सो यहाँ पे गोल्स लिखने हैं, परसेप्ट्स लिखने हैं, सेंसर्स लिखने हैं, फैक्टर्स, एक्शंस एंड एनवायरनमेंट. इफेक्टर्स इज नथिंग बट एक्चुएटर्स ओनली. सो ये एक होमवर्क क्वेश्चन की तरह ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ओनली. ओके, सो आई विल मूव अहेड. Now we are done with the agents. We know what human agents are, we know what robot agents are, we know what software agents are. Abhi we are going to understand about what are intelligent agents. Okay,
So intelligent agent is also similar to agents only. They also sense from the environment. They also perform actions in the environment. But the only thing is that they learn by themselves. They learn on the basis of what they've sensed. Like एक टाइम के बाद वो फीडबैक या फिर जो भी वो सेंस कर रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे वो लर्न करते जाते हैं. एंड ऑल्सो देर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट इंटेलिजेंट एजेंट, दैट इज रेशनैलिटी, दैट आई विल बी टेलिंग यू. सो now we'll talk about what is a rational action. Okay, so rational action is something जहाँ पे we are performing so many actions. Okay, मुझे A place से B place पे जाना है, तो I have 3 routes. मैं सारे routes पे जा रही हूँ. Suppose one route is of like मैं distances ले रही हूँ. A to B एक route सिर्फ 2 minutes में पहुँचा रहा है, not distances नहीं, time ले रही हूँ. दूसरे रूट से मैं अगर जाऊंगी तो 4 minutes लगेंगे, एंड थर्ड रूट से मैं जाऊंगी तो 10 minutes लगेंगे. So all these routes are available. Okay, all these routes are available. I can take actions on the basis of any of the 3 routes. But what is rational route is, rational route will be the best route जहाँ पे मुझे minimum time लग रहा है, मेरा time save हो रहा है. Okay, so that will be the rational action or the rational route जो मैं उस time पे अपने लिए choose करूँगी. So rational action is nothing but the best solution, the best action that any agent can take. So intelligent agents की एक और property होती है, they take the actions in the best way. Okay, जो best कोई action देगा, जो भी actions out of so many actions, जो भी best one होगा, they will perform that action. Okay, now performance measure. Now there is one thing called performance measure जो blue color में highlighted है. Performance measure is nothing but a kind of success. It's a criteria for success कि एक agent कितना successfully, कितना better work कर रहा है, that we measure through performance measure. Like we talked about vacuum cleaner agent, so उसमें उसका performance measure क्या होगा कि वो कितना dirt clean कर रहा है. Okay, अगर dirt clean ही नहीं कर रहा अच्छे से, that means it is not efficient. कितना टाइम ले रहा है, इफ इट इज क्लीनिंग द रूम इन मिनिमम टाइम, इट इज वेरी नाइस. ओके, कितनी इलेक्ट्रिसिटी, हमारा गोल क्या है यहाँ पे कि मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करे, मिनिमम टाइम ले, एंड मैक्सिमम डर्ट क्लीन करे. सो दीज ऑल आर द क्राइटेरिया. इफ इट इज फुलफिलिंग ऑल दीज क्राइटेरिया इन efficient manner, so that vacuum cleaner agent is a good agent or it is a intelligent agent. But if it is not doing so, then it is not a intelligent agent. ठीक है, सो रैशनल एजेंट एक्सपेक्ट्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ द परफॉर्मेंस मेजर. उसका परफॉर्मेंस मेजर बढ़ाना चाहता है. परफॉर्मेंस मेजर कैसे मैक्सिमम होगा, जब वो बेस्ट एक्शन लेगा. ओके, सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज रैशनल. और रैशनैलिटी इज a noun. Like rationality is the sense of doing the rational things. Okay, so I'll tell you one thing. There is a difference between rationality and omniscience. I don't know, have you heard about these two words or not? रैशनैलिटी तो मैंने बता दिया, मैक्सिमम किसी भी बेस्ट एक्शन को परफॉर्म करना इज रैशनैलिटी. बट ओमनी साइंस इज समथिंग, मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरा इंटेलिजेंट एजेंट रैशनल है क्योंकि वो बेस्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है. बट एट द सेम टाइम आई कान से दैट माई इंटेलिजेंट एजेंट इज ओमनी साइंस. ओमनी साइंस मीन्स कि उसको सब कुछ पता है. सो दिस इज नॉट द थिंग. ओके, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है. माई इंटेलिजेंट एजेंट is not omniscience, it is not knowing everything about the world, but it is rational, it is taking the best action. तो ये दो टर्म्स को बस याद रखना, अदरवाइज इट इज ओके. ओके, रैशनैलिटी वाला कॉन्सेप्ट समझ आया, टू टेक द बेस्ट एक्शन आया. ओके, नाउ वी हैव दिस PEAS description. PEAS description is nothing but a kind of description. Okay, जहाँ पे हम एक ये डिस्क्रिप्शन की हेल्प से हम एक ब्लूप्रिंट रेडी करते हैं कि हाउ माय एजेंट विल बी, मेरे एजेंट पे क्या क्या कंपोनेंट्स मैं लाइक इनकलकेट करूँगी, या व्हाट विल बी द थिंग्स माय एजेंट विल बी परफॉर्मिंग. Okay, so PEAS stands for performance measure, E stands for environment, A stands for actuators, and S stands for sensors. Performance measure, we already seen the definition. Okay, it's a criteria for success. Then environment is nothing but the surrounding. Actuators are nothing but the components which are helping to perform the actions, and sensors are the components which are sensing the environment or taking the input from the environment. Okay, अभी हम देखेंगे कि किसी भी एजेंट के लिए PEAS कैसे डिजाइन होते हैं, क्योंकि उसके डिजाइन के बेसिस पे ही हम एक एजेंट को डिजाइन कर रहे होंगे. ठीक है, लाइक इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार, तो सेल्फ ड्राइविंग कार का PEAS में ऐसे डिजाइन कर रही होंगी
कि the performance measure of the self driving car should be what? I'll be considering safety कि मेरे customers कितने safe हैं उस self driving car में, वो कितना time ले रही है. If it is taking minimum time, then customers are happy, and if it is taking maximum time, then might be the customers are not happy. Okay. Then legal drive, मतलब everything is legal, कोई भी illegal action नहीं हो रहा है. Comfort हो रहा है customers का, customers are comfortable in the rides, and profit maximize होगा. ये मेरा goal है, मतलब ये मेरा performance measure है कि अगर मैं एक सेल्फ ड्राइविंग कार के एजेंट को डिजाइन कर रही हूँ तो उसका परफॉर्मेंस मेजर ये सब होना चाहिए. देन एनवायरमेंट क्या होगा? ऑब्वियसली माई सेल्फ ड्राइविंग कार विल नॉट ड्राइव इन द रूम. ओके, इट हैज टू गो इन द रोड्स. जहाँ पे कार ड्राइव करी होगी तो उसके एनवायरमेंट में रोड होगी, दूसरी कार्स होंगी, पेडेस्ट्रियंस विल बी देयर. पेडेस्ट्रियंस आर नथिंग बट द पीपल हु वॉक. ओके, और सारे कस्टमर्स होंगे, माइट बी एनिमल्स भी हो. तो ये सारा एनवायरमेंट है. देन एक्चुएटर्स क्या क्या होंगे मेरे किसी भी मेरे सेल्फ ड्राइविंग कार वाले एजेंट में? स्टीयरिंग व्हील, एक्सीलरेटर, ब्रेक, सिग्नल्स, इंडिकेटर्स, हॉर्न्स, ये सारे एक्चुएटर्स होंगे. एंड सेंसर्स विल बी कैमरा सेंसर, सोनार सेंसर. सोनार आर नथिंग बट साउंड सेंसर्स. जीपीएस, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, एक्सीलरोमीटर, engine sensors and keyboard. So ये सारा like मैंने एक blueprint बना दिया है. PAS is nothing but it tells you a kind of blueprint for a model कि तुम अपने मॉडल को डिजाइन कैसे करने वाले हो. Before designing a model you have to think a lot of these things कि अगर मैं कोई एजेंट डिजाइन कर रही हूँ तो उसका परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि मैंने उसमें एक्चुएटर्स एंड सेंसर्स डाल दिए बट इट इज नॉट परफॉर्मिंग एज इट शुड. So then it will fail in the market. You have to see all these things and then you have to make a agent so that it could work efficiently in its own domain. Okay, so this was the concept of PES. Is it clear? हाँ, clear. Okay. वैक्यूम क्लीनर का PAS तुम लोग खुद से करोगे. इट्स अ काइंड ऑफ होमवर्क. Now we'll go to environment. Okay, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर प्रॉब्लम आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सो आई थिंक कर सकते हैं. बहुत बेसिक है, बस उसमें थोड़ा सा सोचना है, इट विल बी डन. इट इज सो बेसिक. Now we'll go to environment, types of environment. So we have already studied about agents, जो एक बहुत fundamental part है AI का. Now we are coming towards environment. Okay. So environment, I already told you, it's nothing but the surrounding of any agent. I am my agent. My environment currently is my room. Okay, room, then chairs in the room, my cupboard, my laptop, everything is coming under my environment. So now we'll see the different types of environment जो agent के surroundings like होती है. First is fully observable. सो फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में क्या होता है? अगर कोई भी एजेंट है तो वो उस एनवायरनमेंट में रहकर पूरे स्टेट को देख सकता है. लाइक दे हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ चेस. सो इफ यू आर प्लेइंग अ चेस, चेस बोर्ड तुम्हारे सामने रखा है, ठीक है. देयर इज अ पर्सन, देयर इज अ ऑपोजिशन पर्सन, ओपोनेंट दैट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, एंड यू आर सीइंग व्हाट मूव्स ही इज टेकिंग, एंड you also know कि what moves you are performing. तो तुम्हें सब दिख रहा है. लाइक एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर इन दिस फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट. यू कैन ऑब्जर्व एवरीथिंग कि क्या क्या चल रहा है. But in partially observable environment, the second is partially observable. Here, agent can never see what is happening. You can only see your cards. Like they have mentioned the example of card game. You can only see your cards कि तुम्हारे पास क्या cards है, but you can't see what are the cards your opponent person has. Okay, so this is something called as